So this was the case law. सर सुप्रीम स्क्रीन कोर्ट विजिबल नहीं बस है। आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन. अच्छा, स्क्रीन नजर नहीं नजर आ रहा स्क्रीन। कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। आई होप नाउ इट इज विजिबल, है ना? यस यस सर. हाँ। तो बेसिकली इन दिस केस व्हाट वाज द जजमेंट? इट इज अ केस लॉ ऑन प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली. So the IRP preferred an application before the adjudicating authority seeking orders for avoidance of the impugned transactions. Actually, there were two companies. One was the JP Infratech Limited and another was Jayaprakash Associates Limited. ठीक है। Jayaprakash Associates Limited was the holding company of JP Infratech. Actually, in real estate companies, one of the companies is holding the land bank. So land bank was owned by JP Infratech Limited, and Jayaprakash Associates Limited was the company which was executing various projects. It was the holding company of JP Infratech. Now Jayaprakash Associates had taken certain loans, but the assets were held by JP Infratech. So JP Infratech, they mortgaged their property in favor of the lenders of Jayaprakash Associates. ठीक है। अब आप ये देखिए कि दिस ट्रांजैक्शन इज डायरेक्टली हिट बाय सेक्शन 43 बिकॉज व्हाट जेआईएल हैज डन, जेआईएल हैज क्रिएटेड ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर. JAL, Jayaprakash Associates Limited, was a creditor also. They were doing some transactions also because it was a holding company and subsidiary company. So they were doing some transactions also. So what GIL did, GIL created a security interest in favor of the lenders of Jayaprakash Associates Limited. मतलब जे जो जेपी इंफ्राटेक का लैंड था वो इन्होंने मॉर्गेज कर दिया किसके फेवर में? जयप्रकाश एसोसिएट्स के जो लेंडर्स थे। ठीक है। नाउ जेआईएल वेंट इनटू सीआईआरपी. अब व्हेन जेआईएल वेंट इनटू सीआईआरपी, जो ये लेंडर्स थे जेएल के, उन्होंने बोला कि भाई वी ऑल्सो शुड बी इंक्लूडेड इन द सीओसी ऑफ जेपी इंफ्राटेक. ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, यू कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द सीओसी ऑफ जेपी इंफ्राटेक. रादर दिस ट्रांजेक्शन इज हिट बाय सेक्शन 43 एंड दिस ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी रिवर्स्ड. ये था इसका ब्रीफ, इस जो केस लॉ का था. तो आईआरपी प्रेफर्ड एन एप्लीकेशन, ये आईआरपी था अनुज जैन. ही प्रेफर्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द ए सीकिंग ऑर्डर्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ द इम्प्यून ट्रांजेक्शंस whereby several parcels of land were put under mortgage with the lenders of Jayaprakash Associates Limited, the holding company of J. ठीक है. The contention of IRP that the transactions in question were preferential, undervalued and fraudulent within the meaning of section 43, 45 and 66. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारे सेक्शन लगा दिए एप्लीकेशन में. were accepted in part by the adjudicating authority, the NCLT, in its order dated 16/5, and necessary directions were issued for avoidance of at least 6 of such transactions. In other words, in relation to such 6 transactions, the security or interest was ordered to be discharged, and the properties involved therein were vested in the corporate debtor with the release of encumbrances. ठीक है. अब NCLT ने क्या किया? NCLT ने they took an entirely opposite view of the matter and upturned the order so passed by NCLT while holding that the transactions in question do not fall within the mischief of being preferential or undervalued or fraudulent, and that the lenders in question were entitled to exercise their rights under the code. During CIRP, two of the respondent banks, namely ICICI Bank and Axis Bank, sought inclusion in the category of FC of जयप्रकाश जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड. इन्होंने बोला कि भाई हमारे को भी एफसी मानो. ठीक है. बट आईआरपी डिड नॉट एग्री एंड डिक्लाइन टू रिकॉग्नाइज देम एज सच. So being aggrieved by the decision so taken by the IRP, the said banks preferred separate application under section 60 subsection 5 of the code before NCLT while asserting their claim to be recognized. NCLT rejected their application. ठीक है. तो ये फैक्ट्स थे हमारे. अब इश्यूज क्या थे इसमें?
इश्यूज इसमें ये थे कि वेदर द ट्रांजेक्शंस इन क्वेश्चन डिजर्व टू बी अवॉइडेड एज बीइंग प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड एंड फ्रॉडुलेंट, and whether the respondents, lenders of Jayaprakash Associates Limited, could be recognized as financial creditors of the corporate debtor JP Infratech on the strength of the mortgage created. ठीक है, whether the Supreme Court can entertain an SLP filed at the behest of an employees union where an appeal against the judgment is pending. तो डिसीजन इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस द कोर्ट हेल्ड दैट मॉर्गेज डीड इन क्वेश्चन entered by JP Infratech to secure the debts of JP Associates Limited obviously amounts of creation of security interest in favor of JL. तो उन्होंने कहा भाई दिस इज हिट बाय सेक्शन 43. It also noted that Jayaprakash Associates Limited was also the operational creditor, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एंटीसीडेंट ऑपरेशनल डेट, फाइनेंशियल डेट और अदर लाइबिलिटी, है ना. तो JL was also the operational creditor on JIL and was providing financial, technical and strategic support to JP Infratech in various ways. It was also noted that assertion made on behalf of Jayaprakash Associates Limited that Jayaprakash Associates Limited has pledged 70 crores equity share held in JP Infratech in favor of lenders of JIL had also entered into promoter support agreement to meet the DSRA obligation of JIL towards its lenders and further extended bank guarantee to meet the DSRA obligation. That's restructuring. The court concluded that JIL has given a preference, है ना, by way of mortgage of preference transactions in question for the benefit of JIL for and on account of an accident, financial debt, operational debt and other liabilities owed to JIL. The court had that with the transactions in question, JIL has been put in advantageous position vis-a-vis other creditors on the count that JIL get a huge working capital, approximately 3,000 crores by way of loan and facilities extended to it by the respondent lenders. By way of transaction in question, JIL liabilities towards its own creditors shall be reduced insofar as the value of the mortgage properties in question, which is said to be approximately 6,000 crores. So obviously, JIL stands clearly benefited and has derived such benefit at the cost of other creditors and stakeholders of JP Infratech Limited. तो ये ट्रांजेक्शन था बेसिकली. दिस वाज द केस लॉ ऑन प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन विच इज इन आवर सिलेबस ऑल्सो. ठीक है, तो बाकी क्या करते हैं अब इसको जो है ये केस लॉ, प्लीज गो थ्रू दिस केस लॉज ऑल्सो पर्टिकुलरली सो फार एज दे आर रिलेवेंट टू CIRP. तो वी विल ट्राई टू कवर सम ऑफ द इश्यूज विच आर कवर्ड अप टू CIRP और लिक्विडेशन. अभी तो हमने CIRP भी कर लिया और लिक्विडेशन भी कर लिया, है ना. तो वी हैव कवर्ड अप टू सेक्शन 53. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ केस लॉज विल डिस्कस, है ना, और कुछ केस स्टडीज भी कर लेंगे CIRP और लिक्विडेशन वाली. CIRP की केस स्टडीज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू. अभी केस लॉज अभी शेयर कर दिए और लिक्विडेशन वाली केस स्टडीज भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूं. तो प्लीज गो थ्रू दोस केस स्टडीज और बाकी फिर जो है नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करते हैं. ठीक है जी. Okay. ओके, गुड नाइट.